Good morning, everyone, and welcome back once again to another class of government schemes. So, please give me a thumbs up if you can see me properly and can hear me properly. Then I'll quickly start this session. So, today we are going to cover, my dear friends, another very important scheme from the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Now, this scheme is very, very important because these days the government is focusing a lot on the agricultural infrastructure. And yeah, the name of the scheme is Agriculture Infrastructure Fund. Okay. So now please give me a thumbs up if everything is fine, if you can see me properly and can hear me properly. जल्दी से बता दीजिए so that I can start the class. Good morning, everyone. Please give me a thumbs up if everything is fine. Yeah, I think I have a lot of thumbs up, so I should start the session now. And let's talk about Agriculture Infrastructure Fund Scheme. So, as the name says, I think I should not tell you the objective. I should not explain you the objective, right? What is the name of the scheme? Agriculture Infrastructure Fund. क्या नाम है भाई? Agriculture Infrastructure Fund, which means first of all it is a fund, right? For creating what? For creating agricultural infrastructure. Now, this how this fund is working. How this fund is working actually. So basically, what government has done is that the government has created a corpus of 1 lakh crore, right? The government has created a corpus of 1 lakh crore. The government has said that okay, we are going to provide 1 lakh crore rupees under the agriculture infrastructure fund. Okay, so there is a corpus. Now this 1 lakh crore, how this 1 lakh crore will be distributed? क्या ये बिल्कुल ऐसे ही रेवड़ी की तरह या किसानों को फ्री में बांट दिया जाएगा? Of course not. These 1 lakh crores will be given in the form of loans. These 1 lakh crores will be given in the form of loans to different farmers, and these loans will be used for developing the agriculture infrastructure. For developing the agriculture infrastructure. Now, this agriculture infrastructure, why the government intends to develop the agriculture infrastructure? Okay, to enhance the agricultural productivity, minimize the post-harvest losses, improving the farmers' income, and strengthen the rural agricultural infrastructure. ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करना है, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है और रूरल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। इट वाज लॉन्च्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड इट विल बी इंप्लीमेंटेड टिल 2032-33। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है टिल 32-33 का, ये है लोन रीपेमेंट पीरियड का। देखो इसमें लोन दिया जाता है ना, लोन रिपेमेंट पीरियड इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो लोन डिसबर्समेंट पीरियड कब तक का है? लोन डिसबर्समेंट पीरियड जो है वो कब तक का है कि लोन कब तक दिया जाएगा? लोन डिसबर्समेंट पीरियड है जी 2025-26 तक का, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर जो होगा या दिस फाइनेंशियल ईयर, अप टू दिस फाइनेंशियल ईयर द लोन्स विल बी डिसबर्स्ड एंड देन जो रीपेमेंट पीरियड होगी वो टिल होगी 2032-33। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। I hope there are no confusions, my dear friends, in this. Now, who can take the loans? Who can take the loans? Can only farmers take the loan? No. Farmers, farmer producer organizations, cooperatives, startups, agri entrepreneurs, self help groups, all of them can take the loan to create agriculture infrastructure under this particular scheme. And not only this, if there is any private player, if there is any private player, if there is a private big organization who is working in the post-harvest infrastructure development and agri-marketing, that private player can also have the access to loans under agriculture infrastructure fund. ठीक है, what is the financial allocation? कितना लोन दिया जाता है जी? So I already told you the total corpus is rupees 1 lakh crores, right? And this 1 lakh crore will be disbursed to banks and financial institutions till 2025-26. I already told you this, right? The disbursement period is till financial year 25-26 and the repayment period will be till 2032-33. ठीक है जी, and farmers and eligible entities receive 3% interest subvention, right? What is the interest subvention? 3%. If let's say the rate of interest that has been fixed by bank on a particular loan is let's say 12%. Now the government in the form of financial support will provide 3% of interest subvention, which means the effective interest rate for the beneficiary will be 9%. Okay. Now this interest subvention will only be given on the loans up to rupees 2 crores, right? Up to rupees 2 crores. For loans above 2 crores, the interest subvention is applicable till 2 crores only. For example, if any entity
has borrowed a loan of 3 crore rupees. If any entity has borrowed a loan of 3 crore rupees, then the interest subvention shall be applicable for for the amount up to 2 crore. जो पहले 2 करोड़ होंगे उसके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन एप्लीकेबल होगा. फॉर द रेस्ट 1 करोड़ जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही लगेगा. ठीक है. द रीपेमेंट पीरियड इज 7 years एंड यू कैन सी हियर जो डिसबर्समेंट पीरियड था दैट इज 25-26 और 7 साल उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32-33 हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई द ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इज टिल 32-33 लेट बट the disbursement period is till 25-26 and now if we add 7 years which is the repayment period it will become 32-33. ठीक है. Now there is a credit guarantee facility also available under credit guarantee fund trust for micro and small enterprises and this credit guarantee also my dear friends is available for loans up to rupees 2 crore. मतलब सरकार ने बोला कि भैया 2 करोड़ तक का अगर आप लोन लेते हो तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे. उसके ऊपर का जो है आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ 2024 में इसके जो स्कोप था उसको एक्सपैंड किया गया. नंबर 1 इंक्लूजन ऑफ वायबल फार्मिंग एसेट्स फॉर कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स टू एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. नाउ वायबल फार्मिंग एसेट्स का यहाँ पे मतलब ये है बेसिकली ऐसे फार्मिंग एसेट्स क्रिएट किए जाएंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा दैट विल हेल्प not only one farmer or one FPO or one startup or one agripreneur, it will benefit the entire community in that particular area or that particular village, right? So for example let's say कि कोई ऐसा equipment बनाया गया, कोई ऐसा equipment बनाया गया that is helping in post harvest losses, that is helping in what? Post harvest losses. Now this equipment is not only used by a particular FPO or a particular farmer, this equipment is now being used by the entire community, right? And this is helping in enhancing the agricultural productivity and sustainability as well. Sustainability और productivity को focus में रखते हुए इसके viable farming assets के ऊपर focus किया गया. Now integration with PM Kusum component A. PM Kusum, what is it? Kisan Urja Suraksha एवं उत्थान महाअभियान under which the government is providing support to the farmers for solar powered irrigation pumps. Okay, and now this the solar powered pump under PM Kusum component A are now the part of agriculture infrastructure fund, which means if the farmer wants to set up a solar powered irrigation pump then he or she can have the benefits of agriculture infrastructure fund as well. Okay, and enhanced guarantee coverage, enhanced credit guarantee coverage through NAB Sanrakshan Trustee Private Company Limited, Company Private Limited. What are the eligible activities? ठीक है, this is very important कि क्या क्या eligible activities हैं इसके अंदर. okay. सबसे पहले तो पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी. ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी लाइक वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोर्स, साइलोज एंड राइपनिंग चेम्बर्स. प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, मतलब क्रॉप्स को लेके आ गए फिर उसको प्रोसेस करना है. एग्री मार्केटिंग फैसिलिटीज लाइक सॉर्टिंग, ग्रेडिंग यूनिट्स, पैक हाउसेज एंड इनोवेटिव एग्रीटेक सॉल्यूशन. ठीक है, सो बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ agriculture infrastructure, almost all type of agriculture infrastructure is there, but here if you if you focus well, the ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट है. ये सारे के सारे क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है. देखो पोस्ट हार्वेस्ट, ये तो नाम ही लिखा है. प्रोसेसिंग कब होगी, हार्वेस्टिंग के बाद होगी. मार्केटिंग कब होगी, हार्वेस्टिंग के बाद होगी. और इनोवेटिव एग्रीटेक सोल्यूशन में भी दे आर फोकसिंग मच ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. And for the year 2024, for the year 2024, top 5 states by sanction amounts are मध्य प्रदेश. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे. ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट किस स्टेट को मिला है, मध्य प्रदेश को, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, देन राजस्थान, देन गुजरात, देन उत्तर प्रदेश. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश. ठीक है. और आखिरी में अगर हम इसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स की बात करें, एक्सपेक्टेड आउटकम्स की अगर हम बात करें, सो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट बढ़ा है and it is expected to generate 9 lakh plus employment opportunities by 25-26 and we are in the financial year 25-26. Where are those 9 lakh plus employment opportunities? I really don't know, but yeah, we have to study what government is saying. क्योंकि हम जो है पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम अपोजिशन पार्टी नहीं है. हमें वही लिखना है अपने एग्जाम में जो सरकार अपने डॉक्यूमेंट में बता रही है एंड हम मजबूर है. आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
आप लेफ्ट हैं, आप राइट हैं, आप मिडल वाले हैं, आप कांग्रेस पार्टी, मतलब मैं पार्टीज का नाम नहीं लूंगा, आप किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, या फिर आप एंटी डेमोक्रेसी भी क्यों ना हो, आप एंटी नेशनल भी क्यों ना हो, आपकी ओपिनियन एग्जामिनेशन में कुछ भी मैटर नहीं करती. व्हाट ऑल मैटर्स इज द is whether you are pro government or not. If you are an anti government person, and if that reflects from your personality, you are definitely not going to be selected. इसलिए हमेशा याद रखना है एग्जामिनेशन में कभी भी अगर आपको सरकार को क्रिटिसाइज भी करना है तो आपको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसिज्म सरकार का करना है. ठीक है, और वो मैं आपको सिखाऊंगा इंटरव्यूज के ट्रेनिंग के दौरान. डोंट वरी. स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी ऐसा नहीं है. देखो, हर सरकार में कुछ बातें होती हैं, कुछ खराब बातें होती हैं, तो आपको, मतलब आपको क्रिटिसाइज करना, मैं ये नहीं कह रहा, क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन तरीके से, तमीज से. ठीक है ना. स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? 500 LMT, लाख मेट्रिक टन एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेक्टेड, and promotion of agri processing and value addition, 20% increase in farmers income through time value addition of produce. These are the expected outcomes of this particular scheme, and I believe we are going to achieve these targets. Now that's it about this particular scheme guys. बहुत छोटी सी स्कीम थी, मैंने आपको आई होप अच्छे से क्लियर कर दी है. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. The Agriculture Infrastructure Fund was launched in financial year 2020-2021 to provide financial support in the form of loans uh, for uh, for creating the agriculture infrastructure, for enhancing agriculture productivity, minimizing the post-harvest losses, improving farmers' income, and strengthening rural agricultural infrastructure. The scheme will be implemented till 32-33, which includes the repayment period of the loans as well. The loans will be disbursed till 2025-26. Farmers, FPOs, cooperatives, startups, entrepreneurs, SHGs, private players can have the access to the loans under this particular fund. The total corpus is 1 lakh crore. There is a provision of 3% interest subvention for loans up to rupees 2 crores. And if the amount of loan goes beyond 2 crores, then the interest subvention is applicable only up to the amount of 2 crores. The repayment period is 7 years. There is a credit guarantee available under Credit Guarantee Fund Trust for micro and small enterprises, and that too for loans up to rupees 2 crores. ठीक है, आगे चलो. The scope was expanded to include the viable farming assets, to include the PM Kusum component A, to enhance the credit guarantee coverage. Okay, and these are some of the eligible activities. The top 5 states are Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, and Uttar Pradesh. Okay, now that's it for this particular scheme, guys. I hope this scheme is clear. छोटी, हाँ जी बिल्कुल सारे नंबर, इसमें तो ज्यादा नंबर ही नहीं है. अच्छा, ये वाला टॉप 5 स्टेट्स वाले नंबर आपको याद नहीं रखने, ये वाले नंबर भी याद नहीं रखने जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स में हमने पढ़े थे. ठीक है, ये भी नंबर आपको याद नहीं रखना भाई. ये नंबर क्यों याद रखना? ये नहीं याद रखना, ये भी याद नहीं रखना, ये भी याद नहीं रखना. ये इसमें नंबर ही नहीं है, इसमें भी नहीं है. ये वाले सारे नंबर्स ऑफ कोर्स याद रखने हैं, कोर्स. चलो जी. If you have any doubts, please ask me. Otherwise, give me a thumbs up, and I could see कि गवर्नमेंट स्कीम्स के सेक्शंस पे वो रिस्पांस नहीं मिल रहा मेरे को जो कि पीआईबी में मिलता है. तो भाई साहब प्लीज शेयर करें अपने लोगों के साथ ताकि वो लोग भी आके देखें. ठीक है, और ऐसे ही 10-15 मिनट चाहिए होते हैं एक स्कीम को, और जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ट्रस्ट में 3 से 4 मिनट लगेंगे पढ़ने में. ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं देना है. अगर आपको कोई एक स्कीम आधे घंटे में करा रहा है, भैया मत करो, छोड़ दो, मत करो, करना ही नहीं है. यहाँ पे भी 15 मिनट में मैंने आपको 2 बार करा दिया. 15 मिनट भी नहीं, 12 मिनट के अंदर 2 बार करा दिया. 12 भी नहीं चले गए, 1 मिनट तो हेलो हाई में चले जाते. 10 से 12 मिनट ऐसी स्कीम्स के लिए, उससे ज्यादा नहीं देना. और जब आप खुद पढ़ रहे होगे तो आपको तो 3 से 4 मिनट लगेंगे. टुमारो एनी अपडेट, देन हाउ विल कवर प्रीवियस स्कीम. भाई साहब पीआईबी नाम का एक सेशन मैं करा रहा हूँ जिसमें सारी अपडेट्स आती रहती हैं. नहीं, अप्रोक्सीमेटली कोट नहीं करना है. अगर अमाउंट आपको पता है तो ट्राई करो अविरल दैट यू राइट द एग्जैक्ट अमाउंट, that enhance the credibility of your answer. Okay, that Shubham, when the scope was expanded, they expanded the credit guarantee facility. See, the credit guarantee facility was earlier available
with certain terms and conditions through Credit Guarantee Fund Trust for micro and small enterprises. Now, one more entity was included to provide the credit guarantee, and that was NAB Sanrakshan Trustee Private Company Private Limited. So that's why उसमें ये था कि वो credit facility है, credit guarantee है, that will be available only up to 2 crores, but now it will also be provided by NAB Sanrakshan Trustee Company Private Limited. Right, Shubham? Hence, the scope has been expanded from just one entity to two entities. चलिए, anybody else who wants to ask anything? All right, so let's wind it up, my dear friends. I will see you in the next government scheme class on Monday, and आज शाम को 5 बजे PIB में तो मिलना ही है. Thank you very much. Goodbye. Take care, and God bless. Yes, Shubham, they both provide up to 2 crores.